Students, today we will start population attributes. What do you mean by the term population? Population, it is a group of individual of same species. Group of individual of same species. Remember this word. Okay, and what are its features? They should share or compete for resources. They share and there is competition for resources. जो species होते हैं उनके बीच क्या होता है, resource को लेके competition होता है. And one more important, that is breeding. We will write interbreeding. So these are features, okay, of population. Next is, what do you mean by the term birth rate? If young ones is born is known as birth. मतलब कोई young ones born हुआ सो क्या कहेंगे हम लोग, birth कहेंगे. But I am talking about birth rate. What do you mean by the term birth rate? So birth rate is when young ones is born in a population. In a population at a particular time, मतलब during a given period is known as birth rate. Birth means when young one is born, birth rate में क्या हो जाएगा, in a individual during a given time period. ठीक है. So total number of births per thousand in a given population. ये word याद रखना, ठीक है. In a given population. If you don't write in a given population तो simply वो birth हो जाएगा. मतलब when young one is born is known as birth. So you should mention in a given population during a given period of time. It is also known as natality. इसको हम लोग natality भी कहते हैं. Same death rate, same it is same like birth, difference is number of death. Death in a given population during a this. It is also known as mortality. Now take example. Suppose करो कोई pond है जहाँ पे 20 लोटस प्लांट है. कोई पॉन्ड है, वहाँ 20 लोटस प्लांट है. ओके, दे आर 20 लोटस प्लांट. आफ्टर 1 year 28 हो गया. पहले 20 था, आफ्टर 1 year इट इज 28. तो न्यू प्लांट्स कितने हुए? द न्यू प्लांट्स इज 8. नाउ व्हाट विल बी द बर्थ रेट? इट इज ओके. सो पॉन्ड है, उसमें 20 लोटस प्लांट्स, 1 आफ्टर 1 year इट इज 28. सो न्यू प्लांट्स आर 8 and what will be the rate? It is 0.8. so new plants 8 है और ऐसे पहले कितने थे? 20. so 0.8. okay, now what do you mean by the term sex ratio?
Sex ratio is number of females per 1000 males. Number of females present per 1000 males in an area. Okay, it is according to census 2011, it is 940 females per 1000 मेल्स. तो सेक्स रेशियो कितना है? 940 फीमेल्स पर 1000 मेल. ओके, नाउ एज डिस्ट्रीब्यूशन. What is age distribution? Number of people of different age group. ठीक है, different age group. Number of people of different age group in a country. So age distribution consists of reproductive, pre-reproductive stage, reproductive stage and post-reproductive stage. Reproductive, this I think in first chapter we have studied reproductive stage, pre-reproductive stage and post-reproductive stage. Senescence किस में आएगा? Juvenile. You are aware of these words. So age distribution, different age groups, pre-reproductive, reproductive and post-reproductive stage. अब अकॉर्डिंग टू दिस वी विल डिसाइड कब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, कब पॉपुलेशन स्टेडी कंडीशन में और कब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. सो एज पिरामिड्स. So it's consist of growing population, just like our country India, इसमें तो इंडिया ही आएगा. Steady मतलब constant and declining. Okay, तो first we will study growing. Growing में क्या रहेगा? तो growing में ग्रो हो रहा है. सो ऑब्वियसली जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो ज़्यादा होगा. प्री रिप्रोडक्टिव ग्रोइंग पॉपुलेशन में जो प्री रिप्रोडक्टिव की जो पॉपुलेशन है इट विल बी मोर. सो देन दे विल, जब भी प्री रिप्रोडक्टिव में आएगी दे विल प्रोड्यूस चाइल्ड एंड देयरफॉर द पॉपुलेशन विल इंक्रीज. सो इट इज हैज़ ब्रॉड बेस. यहाँ रिप्रोडक्टिव और यहाँ पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ओके, तो इंडिया इज एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज स्टेडी पॉपुलेशन मीन्स कांस्टेंट. तो द सेम so pre-reproductive, reproductive, what is post-reproductive. Okay, so it is भी bell shape बोला जाता है इसको, bell shaped polygon. Okay, example is Austria. It will be constant. Okay. नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग. सो इन डिक्लाइनिंग व्हाट हैपन, जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो उसकी पॉपुलेशन कम रहेगी.
it is pre-reproductive, reproductive and post-reproductive, and it is known as urn-like. Okay, and the example is Japan. So it is declining. अब यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव है तो ऑब्वियसली द पॉपुलेशन विल बी डिक्लाइनिंग कंडीशन. Okay, next time we will discuss the graph.